व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 24। निर्मल और निर्माण बन, विश्व नवनिर्माण करो। आज का टॉपिक है सदा सेवा में हल्के। अव्यक्त इशारे। सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्वाण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा। You will constantly remain बोलने light वाला in service. When you are not बोला humble, but you want बिखरा नहीं respect, जा that सकता। becomes a burden, and इसलिए those who are burdened will come to a बोझ का halt. अनुभव होता They है। cannot go fast. तो सदा Therefore, निर्माण whenever नहीं you है। feel that you have a burden, अगला you must मोहिनी दीदी से understand that you're सुनिए। not humble. Now we will listen to Mohini Didi. ओम शांति। Om Shanti. बाबा को भी पता है Baba also जब वो knows सुनते रहेंगे that तो सुनते children सुनते keep listening to it every day, रियलाइजेशन and बढ़ेगी, अभ्यास as they बढ़ेगा। keep listening, their जब वो effort सब and कर their पाएंगे realization will increase, कितने and they have साल to हो do गए everything in practicality. How 70 many से ऊपर हो years गए have gone past? जब Over बाबा ने 80 पहले years पहले महावाक्य उच्चारण शुरू किए, when Baba started मुरली the चलनी शुरू हुई earliest versions, the Murli साकार was बाबा started के द्वारा। through पहले Sakar बाबा Baba के in the द्वारा beginning, and then और फिर अभी रिवीजन हो रही है and now it is और being बहुत revised. The रोशनी revision is happening. आती है। How मैं तो यही much कहती हूँ ना, is coming जैसे from the बाबा Murli? कहता है कि अगर सागर की शाही बनाओ, पृथ्वी If you के make बड़े the बड़े ink of an ocean पेड़ जो हैं उनको कलम बनाओ तो भी ये and ज्ञान all the पूरा नहीं हो trees, if सकता है। you make the ऐसे ही kalam कभी pen, this जब तक knowledge हम will लोग not जो अपने be is अंदर unlimited, will not धारणा करके finish. अच्छे संस्कार बनाते हैं, And but ज्ञान we make सागर the का ज्ञान dharna, लेकर we के make the sanskars हम दूसरे ग्रहों from पे the चलते हुए knowledge that we receive राजधानी from मंदिर the में आके Gyan आकर Sagar, रुकेंगे। the ocean of इसलिए knowledge. यात्रा है, Therefore, this is मशगूल a रहना है। journey. We have to जल्दी keep doing उल्लास में रहो it. तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कई बार होता है कोई ना कोई कारण से फिर जो मिस Otherwise, होता है वो फिर तो नहीं मिलता ना। if with इसलिए any अभी reason, if we miss हमारा anything, we कल don't का get it होमवर्क again. है So tomorrow's homework is सदा सेवा में हल्के रहो। constantly remain light in service. कोई भी आत्माओं का ज्यादा चिंतन चलना सेवा का Any soul, संसाधन बनाओ, any लेकिन soul, बहुत ही too कम much thoughts or too much thoughts about the तो seva हल्का हो also. जाएगा, नहीं तो जैसे We should सेवा just have सेवा सेवा ही best रहता thoughts है that ना। you will remain light. Otherwise, it's only like we're संतुलन doing seva, जरूरी है। seva. Santulan means सेवा और keep the संतुलन balance. We seva बाबा and बता रहे हैं हल्के रहने का तरीका। Baba is जो teaching us the way to सेवाधारी remain अर्थात light. A server means निर्माण who करने वाले is constructive, who does the nirman, constructive. हर तरह से शुरू से करो। From the very देखो beginning, सेवा right में from कोई the छोटी beginning, मोटी बात होती है, बिगड़ी in चुकी बात service, होती if है, there is a small thing, संबंध में कुछ होता है, उसको we भी try रिजॉल्व to करना resolve है। it. And तो if there is जैसे anything in उसमें वही relationship, सेवा we करते try to करते resolve it. छोटी मोटी And बातें आती हैं if while doing service, if there's anything small that तो comes उनको up, ध्यान देना चाहिए। then we बहुत should pay सारी बातें attention नहीं to that. चलानी है। जब You बाबा should बुद्धि not do आती too है, many खुश thoughts है, should not come. बहुत संतुष्ट है, या If फिर I see बिगड़ी that है from तो one हल्का soul सेवा करो। I am content, or if there is any हमने तो obstacle, do अनुभव the अनुभव mansa किया seva. कि कोई Didi ji आत्मा has डिस्टर्ब had होती है तो experienced many बाबा के times पास that if a जाओ, soul बाबा is ऐसे कर disturbed, दो, then you should sit उस with आत्मा को Baba एकदम and then पहुंचता give है, it to Baba, and that रियलाइज होता है reaches और that चेंज soul हो right जाता है। away, and the soul realizes इसलिए this right away. बहुत जरूरी है Therefore, मनसा it's सेवा। very relevant that we do निर्माणता mansa ही seva. सेवा The की सफलता constructive है। construct बाकी construction बनाते is जाओ, the आगे बढ़ते जाओ, success to बढ़ते जाओ। service. निर्माण Humility. बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। So by remaining humble, you will constantly remain निर्माण light भी in करना है service. और हम्बल अर्थात निर्माण नम्र We चित्त must रहना be है। constructive and we must remain humble. अगर निर्माण नहीं होते तो सूक्ष्म में If we are हल्के not हल्के मन की constructive, इच्छा रहती है।
then we in the subtle way we will have some kind of desire in the physical. तो अपमान फील होने लगता है ना, Then we बाबा start कहते to हैं feel the insult. तो Then फिर Baba बोझ हो says, जाएगा, then you get a burden. बोझ You feel a सारा सारा burden. रुकेगा, And then the one with the भारी होता है burden ना, will always come to a सिर halt. पर कुछ लिया हुआ है, बड़ी And बहुत भारी बैग है, if there's a very heavy bag on the head, चलते चलते बोझ है तो रुकना then while पड़ेगा, walking with too much burden, we will have to stop. नहीं यात्री पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, कहीं भी And बैठ sometimes जाते हैं the क्योंकि people who are on बोझ travelers उठाना sit under पड़ता the है, tree because they cannot lift the burden. तो बोझ They have to वाला take सदा rest. रुकता रहेगा, So the one with the burden will अभी ब्रेक always keep लेनी है, बोलते halting. हैं स्पिरिचुअल They'll say that हॉलीडे we need लेनी है, a अभी स्पिरिचुअल break and they हॉलीडे say लेनी that है, we need to take a तो बाबा spiritual कहते हैं holiday. कि The Baba बोझ says वाला कभी भी तेज नहीं चल सकता, the one with the burden इसकी cannot स्पीड धीरे tread धीरे very, होगी, very इसलिए fast. अगर कोई The भी बोझ speed will be अनुभव very होता slow. है Therefore, if there's any तो समझो burden, ये निर्माण नहीं हो, must understand यहाँ you're पे not कुछ रह humble. गया, There must be यहाँ पे something कुछ that is लग गया, inside. किसी की बात Maybe I लग took गई, it to heart, somebody's talk or क्योंकि something ज्यादा that तो somebody said. छोटी छोटी बात होती है ना, पर अगर Normally, बड़ी there are the चीज है ना things तो are small, बोझ but हो if जाता we है, वो take it too चलता hard, चलता रहता it है, definitely becomes a burden because we keep on revolving बात का the चिंतन thoughts करेंगे around तो it. बात का नहीं चलेगा ना, So, if there is तो any other कुछ thought, I चॉइस will होती not है, remember about Baba. और चॉइस ये है कि मैं And बाबा the को choice ही I याद have करूं, is either I think about बात Baba, करने से बात or बनेगी भी because नहीं, if I बोझ do भी the होगा, practice of thinking हो about the सकता है गिर thought, भी जाए, neither the thing will be और resolved बाबा का nor चिंतन the करने burden से will be resolved. Whereas while I remember सब क्लियर हो Baba, जाएगा, आज बाबा ने everything कहा will be ना cleared कि up. बाबा की Baba याद told से, today, with Baba's remembrance, बाबा याद कराते रहते हैं, Baba बोझ keeps तो on है, reminding us, रास्ता भी क्लियर burden will होगा, be reduced, but not only that, क्योंकि ये the path रास्ता will तो also be तीसरे नेत्र cleared. से दिखता है ना, Because the path is shown, तो the path तीसरा is shown नेत्र by the ज्ञान का third दिखता है, eye. The third eye is of the knowledge, Gyan. तो इसलिए बाबा कह ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है Therefore, it is बहुत very, very जरूरी है relevant and crucial कि सेवा का बोझ ना हो, that there is no burden of the सेवा में service. हल्के रहे, Remain very light in service. तो इस पर मनन चिंतन करके कल प्रैक्टिस करके देखना, And you must practice tomorrow and do the Manan Chintan on this. Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से Now we do the फरिश्ते Murli फरिश्ते revision से रूह रिहान। from 1969. ओम शांति। अव्यक्तवाणी Om मुरली की Shanti. तारीख है 19 अप्रैल 9 1971। April ज्ञान, 1971. तपस्या और सेवा की परिभाषा। अभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना है। ऐसे कई समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त ही है। ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त The है, definition of लेकिन renunciation, tapasya, द्वारा and जो service. प्राप्ति होती है वह गुप्त नहीं हो सकती है। तो धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब Now you प्रत्यक्षता must होगी। not keep the form of incognito विशेष करके dharana. कुमारों में एक Think संस्कार that होता है knowledge is जो incognito. पुरुषार्थ में विघ्न The हो Father सकती है, is incognito, वह so कौन सा dharana is also incognito. कुमारों में वह Knowledge is संस्कार होता है incognito. The Father जो is धारणा incognito, पूर्ण करने but के the लिए attainment of संस्कारों dharana को through them रखता cannot है। be incognito. जैसे जेब में Only पैसा रखा when you जाता show है, your dharana and जैसे the राजाओं को attainments you राजकोष receive में in a visible way, लेकिन फिर भी will there पुरुषों be नहीं glorifications. छोड़ते। Kumars have one इसीलिए specific सेवा sanskar को which कितना becomes an आसान obstacle in their effort. लेकिन What is जब that? जेब में Kumars पैसा have the कुछ न कुछ sanskars of सहारे keeping their रखते sanskars जरूर हैं। aside in यह order to है fulfill मुख्य their संस्कार। desires, just as जहाँ they put भट्टी में pocket money जाके भी aside. और Just as चने the की kingdoms of खीर kings no बनाते हैं, longer exist, लेकिन but फिर भी they still do माया not let go of फिर their भी pretty पारसी purse. रीति से In कहाँ same न way, कहाँ
No matter how much they finish their sanskars, they still definitely keep something or other aside in the same way that pocket money is kept aside. This is the main sanskar. Here in this bhati, you know about all these things. You even imbibe the courage to move along within the खर्च gathering. माफी But even then, Maya, in the form of privy purse, still remains somewhere or other in a corner. Do you understand? So you must renounce all this in the bhakti before you go. Do not think that you have to become perfect at the end. जो So पुरानी a little will still remain. No, renunciation means renunciation. Do not keep even the slightest sanskars within yourself like pocket money. Do you understand? If there are any sanskars remaining, those few sanskars will deceive you. Therefore, you must completely finish off all the old property before you go. You must not keep it hidden away. Do you understand? Acha, this is a group of Kumars. Now, you have to become a Tapasvi Kumar. The speciality that should be visible to everyone of this group is that of the Tapasvi Kumars have come from the land of Tapasya. Do you understand? Each one of you should be visible as one who is wearing a crown of light. You will wear a crown in the future, but before you go from this bhakti, you must become one who is wearing a crown of light. You automatically receive the responsibility of service together with this crown. Therefore, the main attention you have to pay is to be wearing a crown of light. Do you understand? Just as the tapasvi sit on a special seat in the same way, you must remain on the seat of your constant stable stage. Do not let go of the seat. Only then will you receive the throne of the kingdom. Make such effort that as soon as others see you, the sound emerges from them. These Kumars have come having tapasvi Kumars. The renunciation of body and the consciousness and the tapasya of being soul conscious should be visible in a practical form from every physical organ, because the task of establishment of Father Brahma is continuing away, and the task of godly sustenance is also continuing. Now, at the end, the task that has to be carried out through tapasya is to burn your own sins and to burn the tamoguni nature of all souls and tamoguni quality of the elements of nature. Now, do you understand for which task it is tamoguni, a nature of all souls and tamoguni quality of elements of nature? Now, do you understand for which task it is now the time? It is the time to burn away tamoguni nature through doing tapasya. Just as in your picture, the form of Shankar shown as destroyed, which is the tapasvi form, in the same way, stabilize yourself in a constant, stable stage. Show your tapasvi form in a practical way. Do you understand what you have to learn and what you have to become and how you have to become? Satya Om Shanti.